welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. Wondering what is this? Prescripted glasses. My eyes are so irritated right now. Okay, so here it is. I am with my Club Factory haul. This is not a huge Club Factory haul. It was my first time buying from Club Factory. Here it is. I bought few items from Club Factory just to try it out because it was my first time. So I thought of not just buying so many products. I'm just going to share all this with you guys. All the link will be on the description box below. Make sure to check that out. Make sure to like, comment and subscribe to my channel if you haven't already. Let's get started. Okay, so I bought few items from Club Factory as I already showed you guys. Club Factory में मैंने खरीदने से पहले ना मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था कि मुझे क्या एक्चुअल में खरीदना है. Club Factory के ऐप में मैंने बहुत सर्च किया कि मुझे क्या खरीदना है, मुझे ड्रेस खरीदना है कि मुझे ज्वेलरीज खरीदनी है, मुझे क्या खरीदना है. मैंने ना बहुत सारे वीडियोस देखे उससे पहले बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट टाइम. मैं पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती थी. वीडियोस पे देखा कि लोग ज्यादातर ड्रेस वगैरह ऑर्डर नहीं करते हैं और अगर करते भी हैं तो वो लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं आप ड्रेस एंड ऑल ये सब क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर मत कीजिए और इसलिए मैंने ड्रेस नहीं लिया. सो द फर्स्ट आइटम दैट आई गॉट इज दिस ज्योमेट्री इयररिंग्स. ये ना मुझे बहुत टाइम से चाहिए था और मैंने ये शीन पे भी देखा था, मैंने अली एक्सप्रेस पे भी देखा था पर द प्राइस वाज टू हाई. इट वाज लाइक नियर अबाउट 200 रुपीज़. और मैंने ये जब क्लब फैक्ट्री में देखा, जब मैं प्रोडक्ट सर्च कर रही थी कि मुझे क्या एग्जैक्टली लेना है, तो मैंने ये वाला ज्योमेट्रिक ईयररिंग देखा. दैट वाज फॉर ओनली 108 रुपीज़ आई थिंक एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड ये मुझे लेना है. दैट्स इट. और ये दो कलर्स में था. वन वाज सिल्वर एंड वन वाज गोल्डन बट आई बॉट द गोल्डन वन बिकॉज गोल्डन ज्वेलरीज आर माई फेवरेट. सिल्वर ज्वेलरीज भी मुझे पसंद है पर सिल्वर बोहो ज्वेलरीज मुझे ज्यादा पसंद है. और ऐप पे उन लोगों ने क्लेम किया है कि दिस इज अ स्टेनलेस स्टील. मुझे नहीं पता ये स्टेनलेस स्टील है भी या नहीं. और एक चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसका जो अटैचमेंट है वो उन लोगों ने नहीं दिया है. आई मीन वाई. आप लोगों ने अगर क्लब फैक्ट्री से परचेज किया हो, अगर आपको कुछ ऐसा टाइप का मिला हो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दिस इज हाउ द इयररिंग्स लुक लाइक. देन द नेक्स्ट आइटम आई एम गोना शो यू गाइस इज दिस वन. दिस इज द चेन दैट आई गॉट. ये चेन बहुत ट्रेंडी है, बहुत क्लासी है बट द कलर ऑफ दिस चेन वाई आई मीन ये मैंने गोल्डन में लिया था. ये गोल्डन है मुझे पता है. वाई दिस काइंड ऑफ गोल्डन लाइक आई डोंट नो वेदर यू गाइस कैन सी इट इन कैमरा और नॉट बट ये गोल्डन बहुत खराब लग रहा है. बहुत ही चीप क्वालिटी लग रहा है. द क्वालिटी इज नॉट एट ऑल गुड. ये जो मटेरियल है यहाँ पे ये कभी भी खुल सकता है, कभी भी निकल सकता है. और आई डोंट नो दिस वाज फॉर आई थिंक लेट मी सी. This one for 89 rupees और 89 rupees में okay this was the price was 89 rupees. Gold color is so awful. It's very lightweight, comfortable to wear obviously but the material is so bad. But as you guys can see this ये बहुत ही simple में है. इसका जो ये वाला जो steel kind of design है ये मुझे बहुत अच्छा लगा. That's why I was so excited to try this one. Then the next item that I got this rings. Now this rings was for I think 84 rupees, 89 rupees. That was the price. Got 3 earrings for 84 rupees. I'm not gonna complain about these rings. These rings are really nice, comfortable to wear. और क्योंकि ये adjustable rings है so you can just easily adjust it and you can just wear it. इसका I think इसका भी 2 कलर मिल रहा था. One was silver and one was gold. And the one thing that I'm gonna say इसका जो color है it's getting faded. I'm just gonna show you guys a close up. It's getting faded. I don't know कितना दिन ये रहने वाला है. After wearing this for 2 days maybe और पानी भी नहीं लगा है. It's getting faded. It's really disappointing. These rings are my favorite. I'm not gonna complain. Okay, then the next item that I'm gonna show you guys is this one. This one is my favorite one. This is so cute. This is quite nice. ये भी 2 colors में था. One was golden, one was silver. But I thought of just picking up this silver one. I don't know why. ये जो stone है यहाँ पे अच्छे तरीके से fixed है, which I am quite happy about. कि इसका जो stone है वो निकलने वाला है क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है जब हम लोग चीप आइटम्स खरीदते हैं उसका जो स्टोन होता है वो निकल जाता है. सो ये जो स्टोन है ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स्ड है विच इज़ नॉट गोइंग टू कम आउट. एंड या दिस इज़ द ईयर कफ विच इज़ क्वाइट नाइस. दिस वॉज फॉर आई थिंक 89 रुपीज़. बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं है. आप इसको पहन सकते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर preference. Then the next item that I'm gonna show you guys is this one. This bag
This bag was in 3 colors: light grey, brown, this one, and one dark brown, and this one is the brown one. This kind of a small shoulder sling bag, and इसका जो डिज़ाइन है, ये जो बकल काइंड ऑफ डिज़ाइन है, इसका जो डिज़ाइन है, दिस वाज द मेन पार्ट. मैंने ये बैग इसीलिए लिया क्योंकि ऐसा डिज़ाइन का मेरे पास कोई भी बैग नहीं है, एंड आई जस्ट रियली लाइक दिस काइंड ऑफ डार्क ब्राउनिश काइंड ऑफ बैग. पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस वाज द बैग. ये पिक्चर में जैसा दिखाया गया है वैसा ही आया है, नो डिफरेंस. पिक्चर में भी ऐसा दिखाया गया था, पिक्चर में जैसा दिखाया गया था वैसा ही आया है. क्वालिटी ऑफ दिस बैग इज रियली गुड, विच आई एम क्वाइट surprised. You can just carry this as it is, as a purse maybe. This is really nice. The quality is really nice. I'm going to show you guys, and the chain quality is also really nice. और ये जो अंदर का part है, as you can see, it's really cute, it's really nice. You can just carry it as it is, and it's really good. I am really excited to try this one. Then the next item that I'm gonna show you guys is this one. किसी ने ना मेरे YouTube वीडियो पे कमेंट किया था कि buy one Club Factory brush, like glitter brush maybe, and here it is for you. इसका जो packaging है, oh my god, it's so glittery. You can just store few things. You can just use it as a makeup bag maybe. This is so cool. I am really loving how the packaging is. Here are the brushes. ये है glitter brushes from Club Factory. You can see the glitter right over here. This is so pretty, and I was thinking of doing a separate review video using these brushes, but I thought of just showing it to you guys. If you want a separate review video using these brushes, makeup tutorial using Club Factory brushes, let me know in the comment section below. I will love to do that for you guys. And yeah, these are the brushes. This is a powder brush, this is a foundation brush, this is kind of a angled brush, this is a fan brush, this one is the eyeshadow brush, this one is kind of a lower lash brush, और ये जो brush है कि इसको आप cut crease या फिर inner corner highlight पे use कर सकते हो. So this is how the brush is looking, and I'm just loving the glitters. Oh my god, the packaging is really nice. And the last item that I bought is this one. This is a wall sticker that I bought. I know you guys have already seen this in my previous video. This is the wall sticker जो मुझे बहुत टाइम पहले से चाहिए था. मुझे नहीं पता whether I can get the link or not, but मुझे अगर link मिला, I am definitely going to link it down below. ये sticker का जो link है, ये मुझे नहीं मिल रहा है कहीं पे भी. अगर मुझे कोई भी और stickers का link मिला, I'm gonna definitely share that with you guys. ये जो वॉल स्टिकर है, दिस इज क्वाइट नाइस. दिस वॉज फॉर आई थिंक 100 रुपीज मे बी. क्वालिटी ऑफ दिस स्टिकर इज क्वाइट नाइस, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, बट थोड़ा ये जो स्टिकर का जो साइड्स है, जो एजेस है, वो थोड़ा निकल रहा है, which is I'm so scared about. But rather than that, the sticker is quite nice. बहुत ही सुंदर है, कलरफुल है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया था वैसा ही है. And you know what, you can, if you want these stickers to decorate your wall and decorate your room, you can just purchase it from Amazon. Also Amazon पे भी मिलता है, same quality, same look, same price, and Amazon पे भी शायद 100 and 105 ऐसा टाइप का ही कुछ था. So yeah, that was the complete video for you guys. I hope you guys find this video helpful. Make sure to like, comment and subscribe to my channel, and check the description box below guys. If you want to buy something, you can just click the link and you can just buy it for yourself. Let me know on the comment section below what was your first time Club Factory experience. I will love to hear that from you guys. And yeah, that's it for today's video guys. I hope you guys find this video helpful. Make sure to like, comment and subscribe to my channel if you haven't already, and I will see you guys on my next video. Bye.